Okay, now let's look at a practice MCQ for partial fractions. We've been given a fraction 1 over x into x plus 1 equal to a over x plus b over x plus 1. In this case, the general form of the partial fraction is already given, but अगर हमें नहीं given होगी तो हमारा first step is to find the general form, and then to find the general form we're going to be needing to factorize the denominator. But इस case में denominator भी already factorized है, x is one factor and x plus 1 is the other factor. तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया, we have to find a plus b. उसको करने के लिए we need to first find a then b. We have two options for this. Either we can put the given options, जो हमें a, b, c और d options दिए हुए, we can put them back into the general form and then find the solution उस तरह करके. But वो इस in this particular case थोड़ा लंबा पड़ जाएगा. तो what we're going to do is कि since simple partial fraction है तो we're going to simply solve it. 1 over x into x plus 1 multiplied by x into x plus 1, ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड सिर्फ 1 रह जाए, इक्वल टू a into x plus 1 plus b into x. हमने इसलिए किया ताकि लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए. जब ये हो गया then we're going to expand the right hand side. ax plus a plus bx हो गया. We're going to take a common from the x वाली term. तो x को हमने common ले लिया तो a plus b रह गया, और in the constant वाली term we only have a. तो अब हम मैच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से. तो अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 0x प्लस 1. 0x का मतलब 0 होगा, 0 इंटू एक्स का मतलब 0 होता है. तो 0x प्लस 1 अगर करें तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 है. तो और राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट इक्वल टू a प्लस बी है. तो इससे हमारे पास डायरेक्ट ये आ गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन बी विच इज़ आवर फाइनल आंसर.